Okay, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy Semester Exam channel. And this is video lecture series on welding process, and this is lecture number 7. And in this lecture I am going to discuss with you, that is, concepts of resistance welding process, correct? So first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in 2013 in production engineering branch. And my latest GATE rank is AIR 192 in GATE 2020. And I have also engineering services exam written qualified. And I have 9+ years of teaching experience for GATE and engineering services exam, correct? And I have mentored 5,000+ students across the India. And my favorite subjects are strength of material, manufacturing process, material science, and machine design, correct? So first of all, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, and how we can get a part of this. So simply करना क्या दोस्तों, you just follow few small steps through which you can join Unacademy, correct? And you give your preparation a proper age, correct? And after that आपको करना है कि just write learning app on your Unacademy learning app on your Google Play Store. दोस्तों आपको इस तरीके का एक ऐप मिलेगा, इसे आप प्रॉपरली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द इंस्टॉलेशन, यू कैन गेट अ मैनेज गोल विंडो, करेक्ट? यहाँ पे आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एंड आउट ऑफ दिस यू कैन सिलेक्ट दिस गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम ऑप्शन, करेक्ट? एंड आफ्टर दैट प्लस प्रोग्राम, और यहाँ पे एक प्रोग्राम होगा आइकॉनिक, करेक्ट है दोस्तों? इनमें से किसी भी प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, करेक्ट है? और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा, ठीक है? एंड आफ्टर सिलेक्शन ऑफ दिस, सपोज यू सब्सक्राइब ईदर प्लस or you can subscribe iconic, select iconic, then get subscription, correct? और get subscription में जाके आप सब्सक्राइब कर लोगे. दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूं, before subscribing you must apply my promo code, that is MSS10, so that you can get 10% discount immediately. Yes or no? करेक्ट है दोस्तों? नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं प्लस प्रोग्राम और आइकॉनिक प्रोग्राम के बारे में, करेक्ट है? तो अगर हम प्लस के बारे में बात करें, देन दिस इज वेरी बेसिक प्लान, करेक्ट? एंड हियर यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, करेक्ट? और ये कौन होते हैं दोस्तों? दे आर टॉप रैंकर्स, करेक्ट? एंड दे हैव वेरी वास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, एंड यू कैन गेट दीज एक्सपीरियंस घर बैठे with the help of this unique platform, that is Unacademy, correct? And now you can get interactive live classes in a regular basis, correct? And during the class you can interact with your educator and clarify your doubts. Yes or no? आपको वेट नहीं करना दोस्तों, हाथों हाथ क्लास के टाइम पे ही आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हो. और यहाँ पे जो कोर्स कवर होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है, उनकी पीडीएफ से अवेलेबल होती है, करेक्ट है? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर इवोल्यूट कर सकते हो, करेक्ट है? तो ये सारी फैसिलिटी दोस्तों आपको दी जा रही है इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, दैट इज प्लस प्रोग्राम, करेक्ट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट आइकॉनिक प्रोग्राम, देन हियर यू कैन गेट ऑल दोस फैसिलिटीज व्हिच आर अवेलेबल इन प्लस प्रोग्राम, बट अलोंग विद दिस यू कैन गेट सम मोर एडवांटेज, लाइक यू कैन गेट पर्सनल कोच. यही जो टॉप एजुकेटर्स है दोस्तों, करेक्ट है? ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं, ये आपके मेंटर्स होंगे, आप इनके मेंटरशिप में प्रिपरेशन करोगे, आपको प्रॉपर थ्रू आउट द प्रिपरेशन पीरियड आपको गाइड करेंगे दोस्तों. एंड नेक्स्ट, यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस होता है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट टेस्ट, जब भी आप टेस्ट में अपेयर होगे तो टेस्ट को एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे एरर ज्यादा हो रही है और कैसे उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट है दोस्तों? यहाँ पे स्टडी प्लानर भी आपको मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस प्रॉपरली प्लान करके आपको बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, करेक्ट है? करेक्ट. और यहाँ पे दोस्तों प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी अवेलेबल होते हैं. तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं इन दिस पर्टिकुलर आइकॉनिक बैच, करेक्ट है दोस्तों? अब बात आती है कि किस प्रोग्राम को किसे सब्सक्राइब करना चाहिए. तो दो जो स्टूडेंट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सेमेस्टर एग्जाम, अगर सेमेस्टर एग्जाम के आप दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट इस प्लस प्रोग्राम को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका फंडामेंटल प्रॉपर बने, करेक्ट है? आपका बेसिक्स क्लियर हो, करेक्ट? और आप बेसिक्स क्लियर करके जब फर्दर प्रिपरेशन करने के लिए आप मूव करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाएगी, करेक्ट है दोस्तों? तो कुछ किचरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए उससे पहले ही आप बेटर ऑप्शन चूज करके अनअकैडमी प्रोग्राम को आप ज्वाइन करके सारे करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट कॉन्सेप्ट्स को आप सीख सकते हो सिंगल अटेम्प्ट में,
करेक्ट है। नेक्स्ट आइकॉनिक बैच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, गेट एग्जाम और PSUs एग्जाम्स, करेक्ट, और इवन वी टॉक अबाउट स्टेट असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स, करेक्ट, जैसे बहुत सारे एग्जाम्स है। तो जो स्टूडेंट्स इनकी प्रिपरेशन करने के प्लान कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट है, तो दोस्तों ने आइकॉनिक बैच सेलेक्ट करना चाहिए। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, करेक्ट है। और अगर मैं बात करूँ तो दो स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दे मस्ट ज्वाइन एटलीस्ट 24 मंथ ऑप्शन, करेक्ट, 24 मंथ के प्रोग्राम को आपको सिलेक्ट करना चाहिए। और जो फोर्थ ईयर या पास आउट है, फाइनल ईयर में है या पास आउट स्टूडेंट्स है, उनको एटलीस्ट 12 मंथ का तो जरूर प्रोग्राम सब्सक्राइब करना चाहिए। ये सर नो, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस प्रोग्राम के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, 12 मंथ, 18 मंथ एंड 24 मंथ। 12 मंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फी है दोस्तों 30,250 रुपीज, 18 मंथ की फी है 38,500 एंड 44 मंथ की फी है 24 मंथ की फी है 44,000 रुपीज, करेक्ट। तो ये फीस स्ट्रक्चर है विदाउट प्रोमो कोड। नाउ यू कैन सी इन दिस स्क्रीन, यू कैन सी रेड कलर से यहाँ पे लिखा हुआ MSS10, दिस इज माई रेफरल कोड, करेक्ट है। और इस रेफरल कोड को अप्लाई करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हो आपकी फी में, करेक्ट है। तो दोस्तों इस कोड को अप्लाई करना मत भूलना। एंड आफ्टर डिस्काउंट यू कैन सी द फी विल बी लाइक दिस, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ की फी कुछ इस तरीके से है। तो ये फीस तभी हो सकता है दोस्तों जब आप MSS10 प्रोमो कोड अप्लाई करो, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आइकॉनिक बैच की बात करूं तो दोस्तों 12 मंथ एंड 24 मंथ यहाँ दो ही ऑप्शन है। इनकी फी है 45,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज फॉर 24 मंथ। और विथ माई प्रोमो कोड यू कैन सी विथ माई प्रोमो कोड द फी विल बी लाइक दिस। तो दोस्तों सेम प्रोग्राम को ज्यादा फी में पे करने के बजाय आप प्रोमो कोड का अप्लाई करके कम फी में सब्सक्राइब कर सकते हो, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो आज का सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में, करेक्ट है। दिस इज अनदर फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस। रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। अगर इस प्रोसेस की मैं बात करूं दोस्तों तो यू कैन सी हियर दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ। और ये प्रोसेस है क्या, कैसे परफॉर्म करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर, फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फिगर ऑफ दिस रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। यू कैन सी हियर, this is electrode, upper electrode. Now here we have a workpiece like this. These are the two plates where we need to make a joint, welded joint, yes or no. This is plate 1, this is plate 2, and we need to join these two plates with the help of resistance welding process. And here we are going to create spot welding, yes or no. हम लोग यहाँ पे spot welding type joint प्रोड्यूस करने जा रहे हैं दोस्तों। Now you can see here, this is bottom electrode and this is fixed, करेक्ट। ये दोस्तों क्या होता है, दिस इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड like this. And if we see, these electrodes are made up of copper, yes or no, and they are connected with some power source like this.
correct, like this. This is power source, correct, and this upper electrode is a movable electrode. Yes or no? ये क्या है? This is movable electrode, and here we have a provision through which we can apply a pressure. Yes or no? या इससे हम यहाँ पे दोस्तों प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रोड को मूव करा सकते हैं. करेक्ट. नाउ यू कैन सी हियर दीज आर द टू प्लेट्स वेयर वी नीड टू प्रोड्यूस अ जॉइंट. करेक्ट. तो दोस्तों होता क्या है कि if we see this process with help of this graph, then you can see here initially the electrode is moving ideally, there is no force. यहाँ पे कोई force नहीं है दोस्तों. Why? Because there is no contact between electrode and plates. Yes or no? And after that when it is connected, जब आप इसको downward direction में move करेंगे दोस्तों, तो होगा क्या कि this electrode is connected like this. करेक्ट. ये इलेक्ट्रोड कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा दोस्तों. Yes or no? And after when it getting connection, then it starts applying pressure. Correct. And this is called as squeezing pressure. And after applying this squeezing pressure, we maintain this pressure up to a certain period of time so that we can ensure the air between the electrode and workpiece interface and workpiece interface can be escaped. And after that, during this here we can apply current. Yes or no? इसी टाइम पे हम यहाँ पे करंट अप्लाई कर देंगे at a range up to a very high range. Yes or no? And after that when we apply this current, the melting starts at the interface at the workpiece interface zone. अब क्वेश्चन आता है कि why melting start from this workpiece melter interface instead of electrode and workpiece interface? Yes or no? You can see this is called as electrode and workpiece interface, and this is workpiece interface. Correct. So the reason behind this melting is, as we know that this electrode is made up of copper, and copper is having higher electrical conductivity than these plates which are made up of mild steel. Suppose if we consider these plates are made up of mild steel, इज इट क्लियर. ये प्लेट एमएस की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, तो इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस हायर कंडक्टिविटी द रेजिस्टेंस इन बिटवीन द वर्कपीस इंटरफेस इज मोर. एंड हियर एज वी नो दैट this process is based on Joule's law, and Joule's test shows that the heat generation is nothing but this can be written as I square RT. yes or no? ये इस रूल्स पे बेस्ड है दोस्तों, I square RT. And you can see here in the workpiece interface the resistance is high as compared to the workpiece electrode interface, and because of higher resistance in between the workpiece interface, the melting takes place. Yes or no? And as you get melting, then again apply a force pressure. क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे? force pressure, so that this melted zone can be spread. yes or no? ये जो melted zone है दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से स्प्रेड होगा. एंड आफ्टर स्प्रेडिंग दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? दिस इज कॉल्ड एज वेल्ड नगेट. इज इट क्लियर? लाइक दिस. This cylindrical melted zone, this is called as weld nugget. Correct. And now as you apply force pressure, from this zone to this point, then we can hold it for a several period of time so that the weld nugget height can be spread up to a desired thickness. Yes or no?
and after that we release this load like this. Yes or no? Correct. This is the complete cycle through which a spot welding or any resistance welding can be performed. Yes or no? Is that clear? And now you can see here we represent time, and here we represent pressure as well as current. Yes or no? दोनों को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, and this red is rectangle shows that current. Yes or no? क्या शो कर रहा है ये? Current. And you can see here this pressure is called as squeezing, squeeze pressure. Correct. And this pressure is called as force pressure. करेक्ट है दोस्तों. स्क्वीज प्रेशर का फंक्शन क्या है? टू रिमूव एयर बिटवीन इलेक्ट्रोड वर्कपीस इंटरफेस एंड वर्कपीस interface. Yes or no? And the function of this force pressure is nothing but it is applied to ensure proper penetration of weld nugget, and it also ensure the solidification. The metal weld nugget metal can be solidified. Can be solidified. अगर ये solidified नहीं होगा दोस्तों, अगर ये solidified नहीं होगा तो as we say remove the pressure, then the chances of separation of these two plates takes place. So that we can hold for certain period of time, so that the weld nugget can be spread up to a desired depth of penetration along with the liquid metal. This weld nugget liquid metal can be solidified. Yes or no? This is the basic principle of this resistance welding process, and this total time is called as total cycle time. Is it clear? इसे क्या कहेंगे हम दोस्तों? This is called as complete cycle time for producing one spot welding. Yes or no? Is it clear? Correct. Now you can say if we talk about the principle of this resistance welding, अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करूं दोस्तों, तो as we know that principle of resistance welding, तो दोस्तों इसका जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज इट इज बेस्ड ऑन जूल्स लॉ. It is based on Joule's law. Correct. And that is Joule's law is nothing but this is says that heat generation can be written as I square RT, and from this relation we can say that the current range is very high. The welding current is very high. Correct. In the range of 1 lakh ampere current. Correct. This is very high current. Is it clear? Similarly, the voltage, the welding voltage is very low. And if we talk about the resistance
is very high, the resistance is very high, sorry, very low, not very high, very low in the range of micro ohm. Yes or no? किस रेंज में होता है दोस्तों? इन द रेंज ऑफ माइक्रो ओम. एंड द करंट, अगर हम टाइम की बात करें, टाइम टेकन फॉर current supply is very low in the range of millisecond. Yes or no? In the range of millisecond. So these are the basic principle of this resistance welding. Is it clear? यहाँ पे जो क्या होगा, ये जूल्स लॉ पे बेस्ड होता है, तो हीट इसी फॉर्मूला से हम कैलकुलेट करेंगे दोस्तों. और यहाँ पे जो करंट होता है बहुत ज्यादा होता है, इन द रेंज ऑफ 1 लाख एम्पियर. और रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रो ओम. एंड टाइम टेकन फॉर applying current is also very low, that is in the range of millisecond. Is it clear? This is the basic principle of this resistance welding process. Is it clear? Now if we talk about heat balance, जैसे मैंने आपको बताया, you can see here once again resistance welding process. Suppose this is our workpiece. Is it clear? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि how heat balance takes place. ऐसा नो? Is it clear? If the thickness of both the plates is different, or if the material of both the plates are different, correct? Because these are the main advantage of this welding process. Dissimilar metal with dissimilar thickness can be easily welded with the help of this spot welding process. Is it clear? Correct. So you can see here, suppose this is plate 1, this is plate 1, and this is plate 2. Correct. And if both plates are made up of different material, now you can see here, you can see this is a electrode, copper electrode. Yes or no? And why we make copper electrode? Because copper is having very good electrical conductivity, and here the resistance is very low. And if you use different metals whose conductivity is low and resistance is high, then the melting takes place at the workpiece and इलेक्ट्रोड इंटरफेस विच इज अनडिजायरेबल. यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों. तो इसलिए हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि अवर इलेक्ट्रोड मस्ट बी मेड अप ऑफ कॉपर सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज वेरी लो and melting never be takes place at the workpiece and electrode interface. Yes or no? Correct. Then you can see here at this interface, here we can get a weld again. Is it clear? Now if we talk about its numerical aspects, how to calculate heat generation, how to calculate melting efficiency, तो ये सारी चीजें अगर हम देखें दोस्तों, तो you can see if this is sheet thickness T, both plates are made up of same sheet thickness, that this is called as penetration. Is it clear? This is called as penetration, up to which the weld nugget can be penetrated. Yes or no? करेक्ट. तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करूं, करेक्ट, तो कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? यू कैन सी हियर, we need to find out mass of the weld nugget. Mn is a mass of weld nugget. अगर हमें इस मास को कैलकुलेट करना है, तो वी नीड टू फाइंड आउट डेंसिटी ऑफ द वेल्ड नगेट इनटू वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड नगेट. यस और नो? करेक्ट. अब वॉल्यूम के लिए क्या करना है? सपोज दिस वेल्ड नगेट इज मेड अप ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेल्ड नगेट with height h and diameter d. Correct. This is the diameter d and this is height of the weld nugget h. तो दोस्तों क्या आएगा? अगर सपोज मैं इसे स्मॉल h लिखता हूँ, नॉट कैपिटल H, you can see here, then this mass of the weld nugget can be written as density of the weld nugget into volume. Volume can be written as pi by 4 diameter of the weld nugget square into height of the weld nugget. Yes or no? अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू कैलकुलेट वेल्ड नगेट. अगर आपको डायमीटर और हाइट दे दूं और डेंसिटी दे दूं, तो आप इजीली यहाँ पे मास कैलकुलेट कर लोगे दोस्तों. करेक्ट है. बट हियर वी नीड टू फाइंड आउट डायमीटर ऑफ द वेल्ड नगेट. आपके पास सपोज डायमीटर भी नहीं है, तो diameter of the weld nugget can be calculated like this: 6 root T. Correct. With the help of this formula, where T is a sheet thickness. ठीक है दोस्तों? You can see here T is a sheet thickness. Correct.
तो इस फॉर्मूला से हम डायमीटर ऑफ द वेल्ड नगेट कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों. दिस इज डाया ऑफ नगेट. करेक्ट. सिमिलरली हाइट ऑफ द नगेट, height of the weld nugget, that is HN, it can be calculated like this. This is 2 times of sheet thickness minus penetration percentage penetration of sheet thickness. Correct. Then this relation can also be written as 2, ये क्या है, परसेंटेज पेनिट्रेशन इनटू सीट थिकनेस. तो अगर टी मैं कॉमन ले लूं दोस्तों, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन. करेक्ट. सो विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ वेल्ड नगेट. एज यू गॉट हाइट एंड डायमीटर ऑफ द वेल्ड नगेट, देन यू कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द वेल्ड नगेट. बट दोस्तों याद रखना, इसे कब यूज करोगे, व्हेन डायमीटर एंड हाइट ऑफ द वेल्ड नगेट इज नॉट गिवन इन योर प्रॉब्लम्स. अगर ऐसा नो क्वेश्चंस में अगर नहीं दिए हुए तब यूज करोगे, अदरवाइज नहीं. करेक्ट है. नेक्स्ट आता है कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट HM, दैट इज हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, दैट इज HM. तो HM अगर कैलकुलेट करो तो कैसे लिख सकते हो दोस्तों, HM कैन बी रिटन एज MC डेल्टा T प्लस ML, where M is a mass of the weld nugget, mass of weld nugget, and C is a specific heat, correct, and L is a latent heat. करेक्ट. यस आर नो. लेटेंट हीट की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर केजी केल्विन. यस आर नो. करेक्ट दोस्तों. तो कुछ इस तरीके से आप हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कैन बी कैलकुलेटेड. यस आर नो. करेक्ट. नाउ we need to find out heat supplied. Correct. Then you can see, suppose HS is a heat supplied. क्या ये, this is heat supplied. Correct. Then this heat supplied can be written as, that is I square RT. Correct. With the help of this formula you can easily calculate the heat supplied. And as you got heat supplied as well as heat required for melting the metal, then we can find out eta m, that is melting efficiency. क्या find out कर सकते हैं, melting efficiency. Correct. Then melting efficiency is nothing but it can be written as HM by HS. इस फॉर्मूला से दोस्तों हम हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. यस आर नो. इज देयर एनी डाउट. तो ऐसे हम मेल्टिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों. अगर आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट बॉक्स के थ्रू बता सकते हो. ठीक है. करेक्ट. तो आई थिंक ये समझ में आ गया मेल्टिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कि सपोज इफ द थिकनेस इज डिफरेंट एंड मटेरियल इज आल्सो डिफरेंट. करेक्ट. एक बार थिकनेस को हम लिख सकते हैं डिफरेंट. तो केस 1 यहाँ पे कंसिडर करते हैं. यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं हीट बैलेंस. करेक्ट. हाउ टू बैलेंस हीट. करेक्ट. हीट को हम कैसे बैलेंस करेंगे इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस व्हेन आवर शीट, फर्स्ट केस व्हेन द मटेरियल इज डिफरेंट, मटेरियल इज डिफरेंट, शीट मटेरियल इज डिफरेंट, वर्कपीस जो मटेरियल है अगर वो डिफरेंट है, देन हाउ टू मेंटेन देयर हीट. यस और नो. तो लेट्स सी हियर, सपोज दिस इज प्लेट 1 and both plates are made up of same thickness but the material is different. Is that clear? दोनों सेम थिकनेस से बनी है बट यहाँ पे मटेरियल क्या है दोस्तों, डिफरेंट है. करेक्ट. दिस इज T and this is T. Now suppose this material is having conductivity K1 and this material is having conductivity K2, and suppose if we consider K1 is greater than K2, then due to this conductivity
the heat supply in the plate 2 is lower than the heat supplied in plate 1. Yes or no? अब इसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? You can see here, it can be maintained by changing the diameter of this electrode. जहां पे आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा है वहां पे diameter of the this electrode हम कम रखेंगे, and where the conductivity is low, where the diameter is more. Yes or no? You can see here, this is the diameter of electrode D2 and this is the diameter of electrode D1. Yes or no? लिख सकते हैं क्या? तो for maintaining heat balance when the conductivity of both the material is different, then we can apply like this: D2 is greater than D1. और जितना ज्यादा डायमीटर होगा दोस्तों उतना ही करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, करंट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, एंड हायर द करंट इंटेंसिटी हायर द हीट विल बी जनरेटेड. यस आर नो? एंड थ्रू दिस वी कैन मेंटेन द हीट. यस आर नो? तो आई थिंक समझ में आ गया. इफ वी हैव डिफरेंट मटेरियल देन हीट बैलेंस कैन बी टेक्स प्लेस बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स, बाय वेरिंग द डायमीटर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स. दोनों डायमीटर इलेक्ट्रोड्स के डायमीटर को वेरी करके हम मेंटेन कर सकते हैं. अनदर केस हो सकता है दैट इज थिकनेस इज डिफरेंट. यस आर नो? सीट थिकनेस इज डिफरेंट. करेक्ट? अगर हमारे पास सीट थिकनेस डिफरेंट है, सपोज वन प्लेट इज लाइक दिस and another plate is like this, you can see here the thickness of the sheet 1 is less than sheet 2, T1 is less than T2. ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों. Again you can see if you use same copper electrode, अगर सेम साइज का कॉपर इलेक्ट्रोड अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो दोस्तों जिधर शीट थिकनेस कम है वहां पे हीट जनरेशन ज्यादा हो जाएगा, because here the resistance is low, higher the length or higher the resistance. Yes or no? तो अगेन हम इसको मेंटेन कर सकते हैं by varying the size of electrode diameter. Yes or no? Correct? Like this. तो अगेन जहां पे शीट थिकनेस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रोड का डायमीटर चेंज कर दो, हायर रख लो. तो सिंपली बाय वेयरिंग लाइक दिस, diameter of the sheet diameter of the electrode 2 is higher than the diameter of electrode 1, and with the help of this variation again we can maintain the हीट बैलेंस. यस आर नो? करेक्ट? तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका होता है हीट बैलेंस करने का, दैट इज चेंजिंग डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड. बाय वेरिंग द डायमीटर इलेक्ट्रोड वी कैन कंट्रोल द हीट जनरेशन. यस आर नो? करेक्ट? तो आई थिंक दोस्तों ये समझ में आ गया. चलिए अब मैं थोड़े से एडवांटेजेस के बारे में बात कर लूं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. नाउ लेट्स सी. देखो एडवांटेजेस ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. तो सबसे पहला बिगेस्ट एडवांटेज है डिसिमिलर मेटल विथ dissimilar thickness can be easily welded. Correct? Dissimilar metal with dissimilar thickness can be easily welded. Yes or no? डिफरेंट गेज की सीट्स को दोस्तों हम इजीली वेल्ड कर सकते हैं. यस आर नो? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस. यस आर नो? करेक्ट? अनदर एडवांटेज क्या हो सकता है? इन दिस वेल्डिंग प्रोसेस heat affected zone is very low. Heat affected zone is very low. बहुत कम होता है दोस्तों, जिसकी वजह से
बहुत कम मटेरियली अफेक्टेड होगा, देयरफॉर हीट ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जनरली हीट ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज लीक प्रूफ ज्वाइंट कैन बी प्रोड्यूस्ड। करेक्ट। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो वेरी थिन शीट कैन बी इजिली वेल्डेड। करेक्ट, बहुत थिन शीट को हम इजिली वेल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है दोस्तों। करेक्ट है, क्योंकि वहां पे बहुत थिन शीट यूज की जाती है और उन थिन शीट्स को आप इजीली वेल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वेल्डिंग प्रोसेस। इज इट क्लियर? करेक्ट। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस है दोस्तों। करेक्ट। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, आज यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इनके न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। करेक्ट है। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगा दोस्तों। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। करेक्ट। अगर सेमेस्टर एग्जाम चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। करेक्ट है। और अगर आपने अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है दोस्तों तो फटाफट सब्सक्राइब करो विथ माय रेफरल कोड दैट इज MSS10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिले। और न्यू बैचेस लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। 28 दिसंबर से फर्स्ट बैच लॉन्च हो चुका है और जनवरी में भी कई सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों। तो आपके कोई भी लेक्चर मिस ना हो और प्रॉपरली उन लेक्चर्स को फॉलो कर सको, इसके लिए है कि आप फटाफट अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फिर यहीं पे सेशन को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।